Okay, so let's look at the newspaper today, and we'll first look at the Hindu, and then we'll go into the Indian Express, right? Okay. Now, the first is a political news. It's not relevant for UPSC because it just said that Stalin proposes Rahul Gandhi as PM. Not relevant for us. Then we have a Supreme Court judgment, the sparing on, the thing is going on. Again, not that relevant for us. This news might be important. You can use PV Sindhu's example in various cases in ethics, etc., and sports, how women are coming to the frontier. So maybe you can mention this, that she has won the badminton World Cup final. But obviously, World Tour finals, that's there in Guangzhou. It's when you have gone from the front page, you move to the national page normally. Okay, so here we have the first article, which is good for us. That is the NTCA. India has recorded 95 tiger deaths in 2018 and 41 outside the reserve. So this is important for us. So as I was saying, so NTCA, जैसे NTCA दिखे, so what are you supposed to do? You should type NTCA. Okay, and you enter it here. Okay, and you have to go through that ये NTCA है क्या, detail में. तो ये देख लो एक बार. So this is जैसे ही तुझे NTCA दिखे, तो you have to basically look at कि NTCA है क्या, introduction पे चले जाओ. Powers क्या, objectives क्या है. Right, so very quickly, so the National Conservation Authority is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So basically, that is the first important thing that ये किसके अंडर आती है? Okay, constituted under the enabling provisions of the Wildlife Protection Act 1972. So because कई बार क्या होता है वो कुछ और article या act लिख देंगे, ठीक है ना? Through this, and it's amended in 2006, and obviously it's for conservation of tigers. Is a Project Tiger is a centrally sponsored scheme of this. And range है ये, and in situ conservation and designated tiger reserves, right? And has put the endangered tiger on a short path of, ठीक है ना? तो ये सब है, right? In detail देखनी है तो objectives देख लो, right? So obviously providing statutory authority to Project Tiger so that it compliance of the directive become legal, fostering enabling center state management of tiger reserves, right? MOU with the states with a basic structure, federal structure. They're providing an oversight by Parliament, addressing the livelihood interest of local people in areas surrounding tiger reserves, etc. Okay, so ऐसे है. Okay, so just look at, I have an idea. So basically, there are a lot of tigers which have died, ठीक है ना? And they have mentioned maybe a few जहाँ पे tiger reserves सबसे ज़्यादा होनी है. But this might not be that important. What is important is NTCA and tiger reserves of India. So let's say if you can find even कि tiger reserves of India पूरी list क्या है, वो देख लो. ठीक है ना? So look at this. ये मैप है टाइगर रिजर्व्स का इंडिया में. ये तुम्हें याद होना चाहिए. क्लियर है बात? राइट? सो लेट्स से स्टेट वाइज याद होना चाहिए. सो नामदापा कहाँ पे है? अरुणाचल में. काजीरंगा, नमेरी एंड मनास आर इन Assam. Then Dampa is in Mizoram. Pake is again in Arunachal. Baksa is in West Bengal. Sundarbans again West Bengal. Palamau is in Jharkhand. Valmiki in Bihar. Pilibhit, Dudhwa is in Uttar Pradesh. Corbett in Uttarakhand. Sariska, Ranthambore and Mukundra is in Rajasthan. Then we have a lot of them in Chhattisgarh, right? So this area is known as a tiger belt. जैसे महाराष्ट्र में है पेंच, बोर, मेलघाट, टडोबा, ठीक है ना? यहाँ पे सबसे टाइगर मिलते हैं, राइट? फिर इंद्रावती, राइट, संतकोशिया, राइट, एंड सो ऑन. ये सारे याद होने चाहिए और मैप में तुम्हारे हाथ से बना, तुम इसको कॉपी कर लो. आज बैठ के ये सारे मार्क करो अपने उसके ऊपर. दैट्स द आइडिया. ओके, लेट्स गो अहेड. सो ये इंपॉर्टेंट है. फिर GSAT-7A, right, military communication satellite hai. This will be launched right from 19th of December from Sriharikota, right, and ye important hai. Okay, ye kya use karegi? KU band. Now you should also know ye KU band hota kya hai, theek hai na, right? Okay, so what is KU band? Any idea? So let's very quickly look at it. KU band hota kya? So KU band is a microwave frequency band used for satellite communication using frequency of 12 gigahertz for terrestrial reception and 14 gigahertz for transmission. तो ये तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि ये क्या है, KU band, KA band, etc. Okay, right? And so ये मिलिट्री है. So ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के इसके में से, ठीक है? So as I was saying, hello there, can everybody hear me now? Audible, sir. So what do you do is राजीव सीकरी की बुक निकालो और 5th चैप्टर है श्रीलंका पे. तो पेज 74 पे चले जाओ. पेज 74.
ओके सो इंडिया श्रीलंका वाला चैप्टर पढ़ना है। तो श्रीलंका वाला चैप्टर कितने पेज का है? हार्डली 6-8 पेजेस। इसको रीडिंग दे दो पूरी। सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। ठीक है ना? बिकॉज बैकग्राउंड पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स व्हाट विल हैपन इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया श्रीलंका टाइज इंपॉर्टेंट है, बट वो बेसिकली दिस कैन बी कवर्ड इन द समरी आल्सो। ओके कांग्रेस पे है। Okay, then Qatar actually left the OPEC, right? Okay, so Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani decision to stay away from this is a latest example. So basically इसमें तुम्हें क्या करना है? GCC क्या है और OPEC क्या है, दोनों तुम्हें पता होना चाहिए। So first is that you should know the various countries of OPEC. So OPEC. So you should have a very clear idea that OPEC is an intergovernmental organization of 15 nations founded in 1960 by Baghdad by its first 5 members as Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. Abhi 1965 mein headquarters is in Vienna and 15 countries have an estimation of 44% of the global production and 81.5% of the proven oil reserves. ठीक है ना? And previously क्या होता था? 7 sisters थी, MNCs they used to decide the prices. अभी कौन-कौन members हैं? You should remember them. Okay? So the current OPEC members are following: Algeria, Angola, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar. इस पे objective type question आ सकता है. So you should be very clear because Qatar is no longer a member. This is very important for prelims this year. ठीक है ना? इसको कॉपी कर लो, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए। ओके चलो, so this is extremely important, right? GCC क्या है एक बार वो चेक कर लो। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, गल्फ, राइट? इस पे क्वेश्चन आया था, यू नो व्हाट हैपेंड, दे पुट ईरान आल्सो एज अ मेंबर ऑफ द GCC, बट ईरान इज नॉट अ मेंबर। ओके, हु इज द मेंबर? सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतार, UAE एंड ओमान। रिमेंबर अभी भी इट इज देयर, राइट? कतार इज अ मेंबर। सो ये लिख लो, GCC क्या है? So GCC, the Cooperation Council for Arab States of the Gulf, known as the GCC, is an intergovernmental political and economic unit consisting of all Arab states of Persian Gulf except Iraq. Its member states are Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, etc. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें से वो लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी प्रीलिम्स का, दैट यू नो इसमें ईरान भी डाल दिया था उन्होंने चॉइसेस में। सो दे हैव सेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड। सो ये दो आर्टिकल मे बी यू कैन हैव अ लुक। बैक सीरीज पे अगेन क्वेश्चन है, ठीक है, राइट? आर्टिकल आया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बैक सीरीज यू नो थिंग, राइट, फ्यू डेज बिफोर। 13-14 पर जो वीडियो है उसमें बैक सीरीज वाला आर्टिकल काफी डिटेल में डिस्कस्ड है, प्रीटी मच सेम ही है कहानी। ठीक है ना, राइट? यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस आर्टिकल, दिस इज यूजफुल। बॉलीवुड रेटिंग्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल। ठीक है एवरीवन, ओके आगे चलते हैं। तो देखा जाए एडिटोरियल पेज सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, फिर जेपीसी, राइट, पीएसी, ये दोनों है। अब ये हमने कल वाले, इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज वीडियो ऑन यू नो 15 दिसंबर, उसमें यू विल फाइंड दैट हमने पीएससी एंड जेपीसी को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो ये कर आपको व्हाट इज यू हैव टू डू, पीएससी एंड जेपीसी डिटेल में देखना है आपको। ठीक है ना? सो व्हाट इज द पैक? सो लेट्स से जेपीसी, so joint parliamentary committee, so you have a very clear idea ये है क्या। remember it doesn't have a fixed number of membership, it's a ad hoc committee है, ठीक है ना? It is formed when one motion होता है from one house and it is supported by the other, and you know the Lok Sabha members are double in comparison to the Rajya Sabha member. That is the only thing that is there. Fixed number नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं जेपीसी में, right? And it can obtain summons, right? It can obviously call a minister even, राइट? सो ये कौन से टाइम पे हुआ है? बोफोर्स स्कैंडल के टाइम, हर्षल मेहता के टाइम, केतन पारेख, देन सॉफ्ट ड्रिंक जो इशू था, पेस्टिसाइड्स एंड पेप्सी आया था, उस पे जेपीसी था, फिर 2G स्पेक्ट्रम केस था एंड वीआईपी चॉपर स्कैम था, और अभी लैंड एक्विजिशन पे भी चल रहा है। ठीक है ना जेपीसी। अब जेपीसी में करता क्या है? सो इसमें पावर्स क्या है? सो अ जेपीसी कैन ऑब्टेन एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, पब्लिक बॉडीज, एसोसिएशंस, इंडिविजुअल्स, इंटरेस्ट पार्टी सो वो टू और मेक रिक्वेस्ट, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आपको एक कर लेना चाहिए पूरा कवर। नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल होती है जेपीसी की रिपोर्ट, बट जैसे सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे जब थी कमिटी, तो बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट बहुत था, तो चेयरमैन बेसिकली टू यू नो ब्रीफ द प्रेस अबाउट द डिलिब्रेशन ऑफ द कमिटी,
right? So that was used to be there. तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जेपीसी क्या है और पैक क्या है? ये वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज है हमारी, ठीक है ना? इट इज ऑब्वियसली a committee selected of the members of the parliament, right? And obviously checks there. Okay. अभी क्या होता है वैसे इसमें क्या होता है, ये ओवरऑल लोकसभा से नहीं है, 15 मेंबर लोकसभा होते हैं, राइट? 22 मेंबर्स है एंड 7 मेंबर्स आर फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है ना? सो दैट 15 plus 7 है, that is important. Okay, and members are elected amongst the members of the house on this single proportional voting by means of a single transferable vote. Chairperson Lok Sabha appoint karta hai, and normally opposition, right, party heads it. Okay, right, that is the idea. Okay, so देख लो लोक सभा 15 and ये आ सकता है, इस पे ऑब्जेक्टिव टाइम हमेशा आ जाता है. Okay, regularly it comes in the exam. Okay, other than that, not relevant. This page is totally useless for us. Then Navy to Helm Center on Maritime, right, security. So the Navy has inaugurated the Information Fusion Center for the Indian Ocean region later this week. So this is important. This article has to be read by you, right? And obviously coastal security ke question ke andar you can add this point that this has happened. Okay, so what it will do, virtual means is share hoga telephone, email, etc. And first future world, what will happen? Liaison officers for foreign country will also be hosted here, right? So this is the idea. So we'll going to have an information, fusion center in the Indian Ocean region. ये important है. फिर India Maldives पे है, right? This is a topic that can be covered for mains next year. ठीक है, अगेन सेम चीज. सो व्हाट वी हैव टू डू, राइट, ओपन राजीव सीकरी द बुक, राइट, एंड उससे जो मालदीव्स वाला टॉपिक है वो कवर करना है. सो इफ यू, राइट, दैट इज ऑल दैट इज सपोज्ड टू बी डन. इन केस यू हैव ऑलरेडी डन इट, इट इज फाइन. सो इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स न्यूज में है, इसी को इसी के साइड पे खत्म कर लो. इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर और सो. देन लेट्स गो अहेड. फॉरेन में क्लाइमेट चेंज का भी चल रहा है. सो ऑब्वियसली रूल बुक हैज बीन डिलीवर्ड. So nations have struck a deal to breathe into the landmark 2015 climate change treaty after the marathon UN talks, right? And delegates have finalized a common rule book to deliver that the climate change is below 2 degrees, right? And obviously putting together the agreement was a big responsibility, and a lot of people say is that it lacks ambition. Okay, it is required that a lot of things can be done, but इतना हो नहीं पाया. अब इसकी डिटेल्स थोड़ी देखनी पड़ेंगी, ये रिपोर्ट कहती क्या है एंड व्हाट आर द रूल बुक्स. अब इसके बारे में काफी एडिटोरियल्स आएंगे द नेक्स्ट फ्यू डेज. सो यू शुड इन द नेक्स्ट 1 week basically look into this. Okay, then obviously there are key questions which remain unanswered, is obviously the $100 billion per year thing. Okay, so this is something which might not happen. Paris Agreement का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि tensions were there between developed and developing countries and how we transfer emission reduction. So this is one of the big issues there. So ये properly detail में देखना पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं. Finance वाला एक major issue है, and obviously कैसे हम calculate करेंगे emissions को. Again back series data को defend कर रहे हैं राजीव को interview में, you can go through this. Then MSME trade has witnessed loss of 35 lakh jobs in the last 4.5 years. So this has happened, and self-employed categories such as tailors, cobblers, barbers, plumbers, electricians are coming down, right, due to e-commerce. Okay, and worse hits are these. So this is something to be used to jobless growth के related. ये वाला article तुम use कर सकते हो कि growth, jobs are not being created. Bank credit, this is important. ये वाला article जो Monday है ना, Monday को economy editorial बहुत अच्छा आता है. So that is something you have to go through. ठीक है ना? So ये वाला बैंकिंग वाला आर्टिकल, ये वाला पढ़ना है, बैंक क्रेडिट वाला. अदर देन दैट इट्स फाइन. एंड फाइनली इंडियन बस्टर्ड पे है, सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इट इज लोकेटेड एटसेट्रा. तो ग्रासलैंड्स ऑफ राजस्थान बेसिकली, दैट इज द राइट बेसिक आइडिया बिहाइंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो हमें इसको कैसे करना है? So it's also the state bird of Rajasthan. वैसे तो इंडिया का भी नेशनल बर्ड यही होना था, बट दे डिडंट वांट टू बिकॉज़ बस्टर्ड का कुछ और बन जाता है बड़े जल्दी, राइट? सो दे डिडंट डू दैट. ओके, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ लार्ज बर्ड विद हॉरिजॉन्टल बॉडी एंड लॉन्ग बेयर लेग्स, giving it an ostrich-like appearance, right? And अभी basically 150 individuals है, is critically endangered, right?
एंड ये कहाँ का है, बेसिकली ऐसे देख लो एरिया, राइट, ओके। एंड ये स्पीशीज पहले ना वाइड स्प्रेड थी, ओके। एंड इवन जो सऊदी अरेबिया से लोग आते हैं पाकिस्तान इसकी हंटिंग करने, हिस्टोरिकली इट वाज फाउंड इन लॉट ऑफ एरियाज, अब उतना नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा ही इंडिया में ही अवेलेबल होता था, अब 150 ही है, तो इट्स मेनली इन राजस्थान। कहाँ है, जस्ट टू हैव एन आइडिया, डेजर्ट नेशनल पार्क है इन राजस्थान, वहां पे यू कैन फाइंड इट, राइट। एंड देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इन महाराष्ट्र, सोलापुर के पास, दैट इज देयर। फिर करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे यू कैन फाइंड इट अगेन, दिस इज इन मध्य प्रदेश, राइट। देन रोला पादू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो यू शुड नोट दीज डाउन, रानी बेनूर, रोला पेनूर, राइट, ऑल दीज, दैट ये कहाँ अवेलेबल है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है। Obviously, then we have the Mars InSight lander. It has landed on, right? So camera image there. So I think हमने ये डिटेल में कवर कर रखा है. In case you haven't covered the Mars InSight, so what you do? So basically, just very quickly, what you do? इसमें भी सेम चीज ही करनी होती है. साथ में गूगल करते रहो, ठीक है ना? So Mars InSight, ये नासा के वेबसाइट पे जाके you should actually go through this. ठीक है ना। तो अब बेसिकली अबाउट द लैंडर यू शुड गो थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ये दोनों चीजें तुम्हें पता ही होनी चाहिए, बिकॉज उसी से तुम्हें बेसिकली आंसर लिखा जाएगा, उस क्वेश्चन आ सकता है। जैसे दिस इज द इनसाइट, दिस इज अ रोबोट आर्म एंड दिस विल पिक अप थिंग्स एंड पुट इट हियर, एंड ये ड्रिल करने के लिए रोबोटिक आर्म है, ठीक है ना। सो दिस रोबोटिक आर्म विल पुट द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। सो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे हैव एक्चुअली मेंशन्ड इट हियर, SEIS, ये सेस्मिक डेटा चेक करेगा, बिकॉज व्हाट इज द इनसाइट सपोज टू डू, इट विल इंटरनल मास के अंदर क्या है वो फाइंड आउट करता है। एंड जैसे HP3 इंस्ट्रूमेंट है, ये अपना हीट फ्लो प्रोब डालेगा, टेम्परेचर मेजर करेगा अंदर कि मैग्मा कहाँ पे है, एक्सेट्रा, ओके। सो दीज आर द वेरियस इनसाइट टूल्स, राइट। द सीस, मेजरिंग ऑफ द पल्स ऑफ द मास, सो वाइब्रेशंस चेक करेगा कि अर्थ पे कितना आता है मार्स में। Then HP1, it's going to take the temperature of Mars. HP3, then we have RISE, it will test reflexes, basically it will check how it wobbles, etc., composition of metallic core, etc. it will look into it. So ये चीज तुम्हें मतलब तुम्हारा बिल्कुल रेडी होना चाहिए, एक आंसर रेडी होना चाहिए इसके ऊपर, बिकॉज आ सकता है, ठीक है ना। And just to have an idea what is the mission all about, so InSight is in short for interior exploration using seismic investigation, geodesy and heat transport, is a Mars lander designed to give planet Mars its first thorough checkup since it's been formed 4.5 billion years ago. It is the first outer space robotic explorer in the study of in depth the inner space of Mars. So basically what we're looking, हम inner core देखना चाहते हैं Mars की, क्योंकि बाहर तो हमने काफी कुछ देख लिया है, तो we have to study. So basically when you study about Mars interior structure, basically what will happen, you will get to know about other formation of other areas as well, other planets. It will InSight will measure the tectonic activity and meteoric impact on Mars, कि कितना meteor अटैक करता है, राइट, मार्स को, अर्थ की तो एटमॉस्फेयर है तो ज्यादा नहीं आएगा, बट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर obviously use cutting edge instruments to delve into deep below the surface and seek the fingerprints of the process that form the terrestrial planets. So basically seismology, heat flow and precision tracking, ये तीनों चीजें देखी जाएंगी through this, ठीक है ना। And then CubeSat मिनी स्पेसक्राफ्ट है, मार्को 1 और क्यूब 1, ठीक है ना। ये बेसिकली विल बी बिहाइंड एंड दे विल बी रिलेइंग डेटा, बिकॉज कई बार क्या होता है अर्थ और मार्स के बीच में सन आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो रिलेइंग करने के लिए यूजफुल हो, ठीक है ना। सो दैट्स द आइडिया। सो इनसाइट मिशन बेसिकली है क्या, to uncover how a rocky body forms and evolves to become a planet by investigating the interior structure and composition of Mars. And this will determine the rate of Martian tectonic activity and meteoric impacts. ठीक है? So that's the idea. So अब everybody clear? क्या क्या टॉपिक्स निकले हमारे अगर देखा जाए तो, just to have an idea. सर JPC, PAC. हाँ, so एक आराम से देखते हैं. So चल लास्ट पेज से स्टार्ट करते हैं. तो हमारा लास्ट पेज पे क्या टॉपिक था, इनसाइट. यस सर, इनसाइडर. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके व्हाट इज इनसाइट का मतलब, इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसे सोचो. क्वेश्चन आएगा कि इनसाइट क्यों लॉन्च हुआ, ऑब्वियसली व्हाई, राइट, रीजंस फॉर इट्स लॉन्च, एंड क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके,
Yes, sir. राइट? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट? And how will insight give us insight into the formation of planets? इस टाइप का क्वेश्चन टाइप का कुछ पूछ लिया. तो obviously we'll talk about instruments जो हैं etc. Then है Great Indian Bustard पे objective type. एंड इस पे कौन सी लोकेशन पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलती है, तो कौन से नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे है वो हमने लिस्ट बना ली है, ठीक है ना? देन हमारा क्या है उसके बाद, और कौन सा क्वेश्चन था, और क्या किया था हमने? आर्टिकल ऑन इकोनॉमी. हाँ नहीं, उससे पहले हमें इंडिया, बैंक्स क्रेडिट, मालदीव्स एंड इंडिया, श्रीलंका. एंड इंडिया श्रीलंका, ये हमें इसकी अगर हिस्ट्री हमें थोड़ा हमारे पास है, नोट्स पढ़े हुए हैं, वो इंटरनेशनल अफेयर्स की बुक है, तो हमें इंडिया मालदीव इंडिया श्रीलंका कर लेना है. अगर हमारे पास बुक नहीं है तो एमईए की वेबसाइट से यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर दिस. तो MEA.gov.in पर जाओ, इंडिया श्रीलंका एंड इंडिया मालदीव्स का 4 या 5 पेज का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा पीडीएफ का, वो डाउनलोड करके पढ़ लो, ठीक है? देन आया हमारा PAC एंड JPC, इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ओके? देन हमारा आया GDP सीरीज पे, फिर हमने बोला कि GCC एंड OPEC पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? फिर टाइगर रिजर्व पे हमने देखा था, टाइगर रिजर्व वाला मैप बनाना है. यस सर. और क्या हमने बात की थी? 2-3 आर्टिकल और थे ऐसे ही. एक मैरीटाइम सिक्योरिटी वाला था, ठीक है ना? यस सर. GSAT 7 ये था, ठीक है? GSAT 7 फ्रंट पेज पे नहीं था सर, बस वही था PV सिंधु वाला, ओके? सो दैट वाज द आइडिया. क्लियर है बात को? यस सर. सो मैरीटाइम रिलेटेड एक था, ठीक है? इस पे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप अगेन आ सकता है, इंडियन ओशन रीजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, तो सिक्योरिटी इश्यूज पे है ये, ठीक है? राइट? सो ये हमारे टॉपिक्स हैं मेनली आज के, जो हमें बेसिकली देखने हैं. और GSAT 7A को इफ यू हैव टाइम, इसको इसरो की वेबसाइट से देख लो. अभी वैसे डेटा आया नहीं होगा इसका, कोई लॉन्च हुआ नहीं, बट यू में 90% को जब लॉन्च होगा तो यू हैव टू बी कवर्ड इन डिटेल. तो ये टॉपिक बन गया है. क्लियर है आपके न्यूज़पेपर से? यस सर. ओके एवरीवन, कीप राइटिंग. Yes. लगे रहो. Yes. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir.